Good afternoon, everyone. This is Kushal, and I am here for the latest news headlines. Here are some international news. The attack of former US President and Republican Party presidential candidate Donald Trump on Saturday could prove to be political lifeline. Because after the attack, a tremendous wave of sympathy is being seen in their favor. Before the attack, uh, Trump was already ahead of Biden in the national average with 47%. At present, taking advantage of a favorable environmental created after the attack, Trump can win the election with a huge majority, surpassing the national average of 50%. Now, some national news. Clinical trials will be conducted on 10,335 healthy adults to know the effect of vaccine called Dengue for the prevention of dengue fever. The age of people participating in the trial will be 18 to 60 years. Biomedical scientist Dr. Sheila Godbole said Pankia Biotech has developed this vaccine with the help of the National Institute of Health of America. Its clinical trials will soon be started at 19 places in the country. From sports world, the preparations have been affected due to the dispute between some top wrestlers and former Wrestling Federations of India President Brij Bhushan Sharan Singh. But the performance of the wrestlers in wrestling has been good and India has been getting medals wrestling since 4 Olympics. Now some local happenings. In protest against the direct recruitment of SMO, doctors left their pens and went on strike from 9 am to 11 am on Monday. Patients had to face some problems due to doctors not being available. Most of the patients returned without getting treatment. Let's know the weather report. The weather in Sirsa today is partly cloudy with a humidity of 65% and maximum temperature is 41 degrees Celsius and minimum temperature is 30 degrees Celsius. Some Koinkan news. Grade 9 Koinkans highlighted natural drinks benefits and warned against beverages and artificial sweeteners harmful effects in morning assembly, promoting healthier lifestyle choices among students. Thank you and now over to Hindi news. नमस्कार, मैं अर्पित आपका हिंदी समाचार में स्वागत करती हूँ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को हुआ हमला संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि हमले के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। हमले से पहले ट्रंप 47% के साथ राष्ट्रीय औसत में बाइडन से पहले ही आगे चल रहे हैं। फिलहाल हमले के बाद पक्ष में बने माहौल को बुनाते हुए ट्रंप 50% के राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए डेंगियल नामक टीके का असर जानने के लिए 10,335 स्वस्थ वयस्कों पर क्लिनिकल परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों की उम्र 18 से 60 साल होगी। बायोमेडिकल वैज्ञानिक डॉक्टर शीला गोडबोले ने बताया पैनेसिया बायोटेक ने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की मदद से यह टीका बनाया है। इसका देश में 19 जगहों पर क्लिनिकल परीक्षण जल्द शुरू किया जाएगा। अब बारी है खेल जगत की। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ शीर्ष पहलवानों के साथ हुए विवाद के कारण इनकी तैयारियों पर असर पड़ा है, लेकिन कुश्ती में पहलवानों का प्रदर्शन बेहतर रहा है और भारत को 4 ओलंपिक से कुश्ती में पदक मिल रहे हैं। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में चिकित्सकों ने सोमवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल की। चिकित्सकों के सीट पर न मिलने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधिकतर मरीज तो बिना इलाज करवाए ही लौट गए। मौसम का हाल इस प्रकार है। सिरसा में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ 65% नमी रहेगी तथा अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गोइंकन समाचार। 9वीं कक्षा के छात्रों ने सुबह की सभा में प्राकृतिक पेय के फायदों और कृत्रिम मिठास के पेय पदार्थों के नुकसानों पर प्रकाश डाला। धन्यवाद। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में होगा। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं स्नेहप्रीत ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 47% ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਡਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ 50% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਂਗਿਓਲ ਨਾਮਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ 10,335 ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਲਾ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਨੇਸੀਆ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਲਚਲ। ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਰਤ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 65% ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੋਇੰਕਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ होएगा। नमस्कार है अहम आना अस्मि संस्कृत समाचार अंतर्राष्ट्रीय वार्ता। शनिवासरे अमेरिकी राष्ट्रपतिस्य पूर्व राष्ट्रपतिस्य रिपब्लिकन पक्षस्य राष्ट्रपतिपदस्य उम्मीदवारे च डोनाल्ड ट्रम्पस्य उपरि आक्रमणं राजनैतिक जीवनरेखा सिद्धा भवितुम् अर्हति। यतः आक्रमणानन्तरं तेषां पक्षे प्रचण्डः सहानुभूतिरं हस्यते। आक्रमणात् पूर्वं ट्रम्पः पूर्वमेव राष्ट्रियशिराशयः 47% कृत्वा बाइडेन् इत्ययमान् अग्रे आसीत्। सम्प्रति आक्रमणानन्तरं निर्मितस्य अनुकूलवातावरणस्य लाभं गृहीत्वा ट्रम्पः 50% राष्ट्रियसहारणम् अतिक्रम्य विशालबहुमतेन निर्वाचने विजयं प्राप्तुं शक्नोति। राष्ट्रीयवार्ताः। पैनासिया बायोटेक् इत्यनेन अमेरिकी संस्थायाः सह समझौतने स्वदेशीय टीकं निर्मितम् अस्ति। टीकस्य विषाणुसञ्चरणा निरीक्षकस्य अव्ययं विहान NIH टीकायाः समान भवति। प्रारम्भिकदपे अध्ययनेषु अस्य परिणामाः आशाजनकाः अभवन्। डेङ्गूज्वरस्य निवारणे डेङ्गियल् इति टीकस्य प्रभावं ज्ञातुं दशराणि 35 स्वस्थविकानां निदाने परीक्षणं भविष्यति। परीक्षायां भागं गृह्णन्तः जनानां वयः 18-तः 60 वर्षाणि यावत् भविष्यति। क्रीडाजगतः अस्ति। भारतीय कुश्ती महासङ्घस्य पूर्वाध्यक्ष बृजभूषण सिंहेन सह विवादस्य कारणात् तेषां सज्जता प्रभाविता अभवत्, परन्तु कुश्त्यां मल्लानां प्रदर्शनं श्रेष्ठं जातम् अस्ति। तथा च भारतं 4 ओलम्पिकानां कुश्त्यां पदकं प्राप्नोति। स्थानीयकार्यं पश्यामः। SMO इत्यस्य प्रत्यक्षयोगेः विरोधे चिकित्सकाः सवनीयानि कलामानि त्यक्त्वा सोमवासरे प्रातः 9:00 11:00 हड़तालं कृतवन्तः। वैद्याः न प्राप्यन्ते इति कारणेन रोगिणां समस्यानां समानं कर्तव्यम् आसीत्। अधिकांशः रोगिणः चिकित्सां विना प्रत्यागतवन्तः। मौसमः एवम् अस्ति। सिरसा अद्य आंशिक रूपेण मेघयुक्तं भविष्यति च अधिकतम तापमानं 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमानं 30 डिग्री सेल्सियस भविष्यति इति अपेक्षा अस्ति। विद्यालयस्य वार्ताः। नवशीर्णीय गोयङ्का प्रातःकाले सभायां प्राकृतिक पेयानां लाभं कृत्रिमं धूर्तयुक्तेः पेयानां हानि च प्रकाशितवन्तः। धन्यवाद। अब खबरों का प्रसारण जर्मन में।
Guten Tag, ich heiße Kamakshi aus Königin-Nachrichtenraum. Heute Nachrichten ist internationale Nachrichten. Der Angriff auf den ehemaligen US-Präsidenten und den der Republikanischen Party Donald Trump am Samstag konnte sich als politischer Rettungsanker erweisen, denn ab dem Angriff ist eine enorme Welle der Sympathie zu seinen Gunsten zu verzeichnen. Nationale Nachrichten. 10.034 gesunden Erwachsenen werden klinische Studien durchgeführt, um die Wirkung eines Impfstoffes namens Danger Zur von Dengue-Fieber zu untersuchen. Das Alter der an der Studie teilnehmenden Personen beträgt 18 bis 60 Jahre. Die Biomedizinerin Aston Sheila Godbole sagte, Panacea Biotech habe diesen Impfstoff mit Hilfe des National Institute of Health of America entwickelt. Seine klinischen Studien werden bald an 19 Standorten im Land beginnen. Sportsnachrichten. Die Vorbereitungen wurden durch den Streit zwischen einigen Top-Ranger an dem ehemaligen Präsident der Wrestling Federation of India, Brijbhushan Sharan Singh, bestätigt. Aber die Leistung der Ringen im Ringen war gut und Indien hat seit 4 Olympischen Spielen Medaillen im Ringen gewonnen. Lokale Nachrichten. Aus Protest gegen die direkte Rekruttierung von leitender Arzt verlieben die Ärzte ihre Büros und strichen am Montag von 9 bis 11 Uhr. Die Patienten hatten Probleme, weil keine Ärzte verfügbar waren. Die meisten Patienten kehrten zurück, ohne behandelt zu werden. Nachrichten. Queens der 9. Klasse betonten in der Morgenversammlung die Vorzüge natürlicher Getränke und Worten von der schladischen Auswirkungen Getränken und Künstlichen, um die Schüler zu einem gesünderen Lebensstil zu ermutigen. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.